Now let's move on to the nucleophilic substitution reaction. Again, nucleophilic substitution reaction is the replacement from the aromatic ring by a nucleophile. But as I told you earlier, that for nucleophilic substitution reaction, the benzene ring must be sufficiently activated. And what actually activates this ring for nucleophilic substitution reaction? We have seen in electrophilic aromatic substitution reaction that when you have electron donating groups, the ring is activated towards the substitution reaction. If electron withdrawing groups are there, then it is deactivated towards electrophilic aromatic substitution reaction. But for nucleophilic substitution reaction, the case is opposite. So for nucleophilic substitution reaction, because nucleophile itself is electron rich, the ring must be activated by a decrease in the electron density. And that decrease can be caused by electron withdrawing groups, which will withdraw electron density from the ring and activate the ring towards nucleophilic substitution reaction. Okay, so what are the different mechanisms that these reactions undergo? The SNAr mechanism. This is substitution nucleophilic aromatic substitution reaction. This reaction proceeds in two steps that we will discuss here. The first step is the attack of the nucleophile on the ipsocarbon. What is an ipsocarbon? Ipsocarbon is a substituted carbon atom in the benzene ring. So you have to have some groups attached. So you see here benzene ring is attached to this X, and because it is attached to this carbon, this is the ipsocarbon, nucleophile will attack this carbon atom. And in the second step, then the leaving group leaves. But what happens in the first step? Let's see that. When the nucleophile attacks here, nucleophile, you know, it's electron rich, or it might have a negative charge as well. So when it attacks here, this carbon, the ipsocarbon, which already has formed 4 bonds, has to let go one of the bonds. It has 3 sigma bonds and 1 pi bond. So one of the pi bond will be broken, and the direction of the shift of electrons would be away from this nucleophile. These electrons will be shifted onto the next carbon atom, and so this carbon here will have a negative charge. So this complex is produced, and you can see that the nucleophile and the X, they are attached to the same carbon atom. Now, this negative charge, of course, is highly unstable, and luckily it has a double bond close to it. So it's a situation of delocalization in which the pi bond is in conjugation with a filled p orbital. In the previous case, we saw that we have that sigma complex, which has a positive charge inside the ring, in which the double bond is involved in conjugation with an empty p orbital. But here it is involved with a filled p orbital. So this negative charge will be shared between these two carbon atoms so as to dissipate this charge density, and as a result, because this carbon already has formed 4 bonds, it lets go one of the pi bonds, and so the electrons are shifted onto the para position, and now the para position has a negative charge. Again, from here, the electrons are shared between these two carbons, and these electrons are then shifted towards this carbon having a negative charge here. Finally, because aromaticity has to be restored, by the way, this complex is known as Mesenheimer complex, after the name of the scientist who worked on it, Jacob Mesenheimer. So this is known as Mesenheimer complex. So in the second step, the leaving group leaves. This complex is unstable, of course, although it is it involves resonance, but still it is unstable. So this negative charge is then shared between these two carbon atoms to restore aromaticity, and so the leaving group leaves, taking the electrons along with it in the form of a negative charge on an anion, right? And so you can see that actually the leaving group has been replaced by the nucleophile.
So here are some common examples of the substitution nucleophilic aromatic mechanism. So let's see the starting materials, the different starting materials that we have. So we have this benzene ring, which has two substituents, a halogen and a nitro group, para to each other, right? And this is reacted with hydroxyline and heated at a high temperature. And the product you can see is a replacement of the chlorine by the OH group. There is nothing happening on the nitro group. So what it means is that the reaction is actually happening on this ipso carbon, and chlorine is here acting as a leaving group, while the nitro group here is an activating group, which means that it withdraws electron density from the ring, making it electron deficient so that this nucleophile or the base can easily attack the ipso carbon. Now, in the second example, you can see that again we have chlorine and nitro substituent, but the relative positions are different. Here, in the first example, they were para to each other, and here they are ortho to each other. Now, if the electron withdrawing group is ortho and para, that will affect the overall reactivity of this molecule, which means if the electron withdrawing groups are at ortho and para positions, that will help the reaction to proceed in a forward direction. In both cases, you can see we will have the replacement of the chlorine by the hydroxyl group. Then we can also have another halogen like fluorine in this case, and it is reacted with a methoxide anion, and fluorine actually also can leave. Fluorine is a good leaving group and it can leave, it can be replaced, and then the complex is stabilized. Let's see how. So here it is. You can see that this hydroxyline, when it attacks the ipso carbon, an intermediate is formed, right? So here the geometry is somewhat tetrahedral. This carbanion, as we have discussed yesterday in the mechanism, general mechanism, is stabilized. यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो बजाय इसके कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रिंग में ही डीलोकलाइज हों जिस तरह हमने जनरल मैकेनिज्म में देखा था, बट वो भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन इस नाइट्रो ग्रुप का जो पुल है, इलेक्ट्रॉनिक पुल, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इन दो कार्बन्स के दरमियान शेयर होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाहिर है इस कार्बन पे आके रिजाइड करेंगे। तो जैसे ही ये इस कार्बन पे आते हैं तो यहाँ इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एंड दैट नाइट्रो ग्रुप withdraws electrons from this negative charge या the pi bond। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। नाइट्रोजन ऑलरेडी हैज पॉजिटिव चार्ज, सो इट ब्रेक, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इट ब्रेक्स वन ऑफ द बॉन्ड्स विद द ऑक्सीजन, दैट इज द पाई बॉन्ड अगेन। 3 इसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है, तो वो टूट जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जाहिर है इसमें आप देख सकते हैं दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वापस कोलैप्स होंगे। लेट मी ड्रॉ इट हियर, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट इसकी नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये ड्रॉ किया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस शिफ्ट होंगे, और जब ये वापस शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन या तो इस तरफ जाएंगे या इस तरफ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दोनों साइड्स इसके लिए एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आएंगे और ये यहाँ आके नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, जो एनाइन बनेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बन गया, ये NO2 हो गया, ठीक है। ये वापस अपनी हालत में आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, सॉरी, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब यहाँ 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, OH और Cl, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज आके यहाँ एरोमेटिसिटी रिस्टोर करेगा और क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी।
तो यहाँ बताने का मकसद ये था द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोजिशन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप रिलेटिव टू द लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हो तो इसकी डीलोकलाइजेशन बहुत इफेक्टिव होगी। Then if we have this nitro group at the ortho position to the chlorine atom, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगेन आके क्लोरीन पे अटैक करेगा और क्लोरीन इप्सो कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकालेगा। सो व्हाट हैपेंस इज अगेन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ मैंने ये इसको डायरेक्ट ऐसे रेजोनेंस शो की है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है इनकी पोजीशन तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं, यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं। ठीक है, सो यू कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनाइन फर्स्ट दैट गोज ऑन एंड ऑन until it reaches here and then it is shared with nitro group, और फिर जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें दोनों ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज हो एंड फाइनली इट कोलैप्सेस बैक टू रिमूव क्लोरीन। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे शो करें तो कोई मसला नहीं, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बना है ये वापस आएगा और यहाँ से जब ये एरोमेटिसिटी रिस्टोर होगी देन क्लोरीन विल लीव and we will have the formation of the product. Now you see that if the nitro group is at ortho or para position, so the delocalization is effective and it can stabilize the negative charge more effectively. ठीक है, वो इसलिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली उस कार्बन पे आके रिजाइड करता है ड्यूरिंग ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जहां पर डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप अटैच है और वो इसको डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। अगर ये एरो जो है ये आप डायरेक्ट यहाँ पर शेयर ना करें, पहले यहाँ नेगेटिव चार्ज शो करें और फिर शो करें कि नेगेटिव चार्ज इसके साथ शेयर हो गया। ठीक है, so that means that this negative charge is stabilized by this nitro group। लेकिन अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर होता मेटा पोजिशन पे तो फिर चूंकि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ बनना था पैरा पे, तो इसकी effectiveness इतनी ना होती। So if it is at ortho and para to the leaving group, then it is more effective.